नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं थिएटर इन द डिजिटल एरिया, नाट्य दर्पण। मुख्य बात यह है कि हम कई बार सुनते हैं जिंदगी एक नाटक है, पर नाटकों के लिए हमारे पास सचमुच समय है कि नहीं? हम कितना नाटक देखने जाते हैं और नाटक क्या भूमिका निभाते हैं हमारी विकास यात्रा में? किस रूप से हमें समृद्ध करता है नाटकों से जुड़ना? एक बड़ा अनूठा वार्षिक कार्यक्रम नाट्य दर्पण जो न्यू जर्सी में आयोजित होता है, उसकी प्रेरणा अशोक चौधरी जी, जिन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो नाटक और नृत्य कला माध्यमों के साथ में कुछ कमाल कर रही है न्यू जर्सी में। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आदरणीय अशोक चौधरी जी का और साथ में नमस्ते। अमीय मेहता जी का। अमीय जी नमस्ते। नमस्कार। अमीय एक नाट्य निर्देशक के रूप में अपनी विशेष पहचान रखते हैं और उस परंपरा को जहाँ निर्देशक अभिनेताओं के साथ जुड़कर कुछ कमाल रचता है, वो निरंतर सक्रिय रहे। Ashok, you will begin with the idea which led you to conceive of Natya Darpan. Were you a big fan of plays? Were you yourself an actor? How that came about? Well, to begin with, yes. Initially, I'm a really, really big fan of theater. I grew up in Pune, in Maharashtra, India, where most of my friends and colleagues are participating in either kind of a performing art, either classical music or theater or classical dances. So I grew up listening to the music, watching really good plays. Um, and at age of I think 10, I got opportunity to perform in Akashvani Pune, which is a Marathi radio station. Of course, it is a national radio station, Pune branch. And I was participating as a child actor until I was 16-year-old under their program called Balodyan. And after that, I started small theaters. I participated in a couple of competitions, which are very, very prestigious competition at the time, called Purushottam Karanda. And after that one, then as you know, parents and padhai and all that stuff, I stopped doing theater until I come back to New York, New Jersey after my PhD, and I had a job. So again, I started watching plays and got involved into many non-profit organizations such as Marathi Vishwa. There, I was a vice president, president, and I organized a lot of theater related as well as the dance related events, and I initiated a classical dance competition called Jhalak. After I finished my volunteer work with the organization Marathi Vishwa, I realized that in these many years I was involved with this nonprofit organization, there is really a need for a local talent, local theater artists, or local dancers or choreographers to have their platform. They may not have enough time, skills to organize this type of event. However, during last 17, 18 years, I have acquired that skill of organizing events. So why not to Yeah. help these So artists. That yeah, let was me come back to you. Yeah, let me come back to you, and you make a very important point. And Amiya has been in that situation where, as a director or lover of plays, he probably found himself at a difficult situation in wearing all these hats. So, before we talk about Amiya and the bond with IHCA, अम्मी अब आपके पिताजी भी नाटकों के साथ जुड़े रहे हैं और कुछ ऐसे संवाद होते हैं नाटकों के जो हमारे साथ रह जाते हैं। ऐसा अगर फ़िल्म के हवाले से मैं बात करूँ तो हम में से कई लोगों को आनंद के कुछ संवाद याद हैं कि हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जहाँ पनाह जिनकी डोर ऊपर वाले की उँगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। और ये मैं कहता हूँ कि फ़िल्मों में जो एक नाटकीय तत्व का प्रयोग होता है, वो इसमें बखूबी किया गया क्योंकि
इस संवाद का पहले अर्थ कुछ और होता है, और अंतिम दृश्य तक जब आप जाते हैं तो वो स्पूल घूम रहा होता है और इसका एक अलग प्रभाव छूट जाता है। तो आप अपनी याद से ऐसा कोई डायलॉग है जो आपको याद रहा हो, आप उसको? जी, बिल्कुल। हमारा एक बहुत ही बढ़िया नाटक था, जो कि प्रयोग ने नाट्य दर्पण के साथ जो हमारा एक जुड़ाव हुआ है, उस जुड़ाव के अंतर्गत हमारा पहला ही नाटक जो हमने किया नाट्य दर्पण में, दिस वाज़ मेरे ख्याल से 2017 की बात होगी या 16 की। जो नाटक का नाम था नाटक नहीं। उसमें एक सटायरिकल प्ले है, एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से नाटक लिखा है लेखक ने। तो दो भिखारी हैं मेन कलाकार, और दोनों भिखारी एक बस स्टैंड पे खड़े होके, और वैसे तो पढ़े लिखे भिखारी हैं, समझदार है, पर वो उनकी जो बातें हैं वो पूरे समाज पे, समाज के कई लोगों पर व्यंग्य हैं। तो उनमें से एक भिखारी दूसरे भिखारी से बात कर रहा है, और वो जो नाटक पे लिखने की विधा है उसी पे ही व्यंग्य है। कि वो एक भिखारी, पहला भिखारी दूसरे से बोलता है, यार नाटक में ये लड़की, इस नाटक में तो लड़की की जरूरत नहीं थी, इसमें इसकी लड़की की एंट्री क्यों है, क्यों लिख दी गया? तो दूसरा भिखारी बोलता है, भाई लड़की के बिना काम होता ही नहीं है, लड़की के आकार मात्र में सम्मोहन है, लड़की के आवाज में सम्मोहन है, लड़की की उपस्थिति में आदमी आदमी नहीं रहता, एक अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित कठपुतली के माफिक होता है। तो इसके लिए लड़की का होना जरूरी है दर्शकों को प्रभावित करने के लिए। तो ये इस तरीके का एक व्यंग्य था उसमें, जो मुझे एकदम से याद आया। हम्म। तो तो अशोक जी, ये वचन सत्य है क्या जो इस संवाद के माध्यम से अम्मी जी ने कहा? वैसे मैं तो नहीं कह सकता कि ये सत्य है या असत्य है, क्योंकि मैं तो थिएटर आदमी नहीं हूँ। I try to organize the events and I really enjoy that doing. So I'm not a theater person to judge this one. So let's go to the other side, where we look at the impact of being इन अ थिएटर। तो एक एक जादू सा बन जाता है अमीय जी। जी। आप अ, आप थिएटर से जुड़े रहे, उसके पीछे क्या खास फीलिंग आपकी रहती है? जी, थिएटर से जुड़े रहने में एक प्रकार का, मैं ये कहना चाहूँगा, नशा है। आप एक बार अगर जुड़ जाते हैं तो उससे अलग होना चाहें, तो भी वो आपको वापस खींच के ले आता है। ज एक प्रकार से नशा, जैसा मैंने बोला। जो थिएटर में जो अभिनय का आनंद है, जो जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आई कॉन्टैक्ट विथ योर ऑडियंस एंड गेटिंग देयर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, दैट इज वन थिंग विच यू कैनॉट एक्सपेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो मूवी हो, ओटीटी हो, या कुछ भी हो। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है बड़े से बड़े कलाकार भी बहुत जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे वो कुछ भी नाम ले लें, नसीरुद्दीन शाह हैं, नाना पाटेकर हैं, वो आज भी थिएटर से जुड़े हैं। आज भी नसीरुद्दीन शाह जैसे सुप्रसिद्ध मूवी कलाकार पृथ्वी थिएटर में थिएटर करते हुए देखे जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अशोक जी, ये जो नाटकों का सिलसिला रहता है, इसमें एक और विशेष बात जो आपका नाट्य दर्पण होता है उसमें यह है कि आप भारत की विभिन्न भाषाओं के नाटक, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब। तो क्या अंतर आपको लगता है अलग अलग भाषाओं के नाटकों के साथ जुड़कर? So each of the regional language has its own rich history of having plays. And I wanted to bring those nuances from, for example, in the Bengali, in Marathi and Hindi, Kannada, Gujarati. Each of them, they have a very unique way of presenting plays. For example, in Gujarati, it is a Bhavai type of thing. In Marathi, it is a Lokanatya. Similarly, we also have something in Bengali, which is a street plays. So these are different types of genres in which are very specific to that region or that language. जैसे अमेय जी ने 2-3 साल पहले प्ले किया था बुंदेलखंड के लोगों के ऊपर। दैट वाज अमेजिंग प्ले एंड दैट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय आवर ऑडियंस बिकॉज़ दे नेवर सॉ दिस टाइप ऑफ plays in other type of other areas. So I think bringing these different regional plays, a flavor of this is really
important and of course get appreciated by the audience. एंड अमीर जी, व्हाट डू यू थिंक? हम लोग अक्सर ये सुनते रहते हैं कि भी हिंदी में अच्छे नाटकों की कमी है, तो क्या बात है कि मराठी में आपको अधिक नाटकों का खजाना सब मिल जाएगा या गुजराती में मिल जाएगा, हिंदी में कम रहता है, ऐसा क्यों है? इसमें थोड़ी सच्चाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि मराठी, गुजराती, बंगाली और कुछ हद तक मैं पंजाबी भी कहूँगा, मैं जो नाटकों की परंपरा रही है वो कम से कम हिंदी से 50 या 100 साल पहले से रही है। तो जब तक हिंदी में नाटक भारतेंदु ने शुरू किया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तब तक इन भाषाओं में नाटक की परंपरा अच्छी जड़ पकड़ चुकी थी। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये जब जड़ पकड़ चुकी थी तो लोग जनमानस में प्रादेशिक जनमानस, चाहे मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी हो, उनके जनमानस में नाटक समा गया। जितना वो हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी बेल्ट में नहीं समा सका, लोगों के अंदर नहीं समाहित हो सका, और जब तक हिंदी भाषा में नाटक ने कुछ स्वरूप लेना चालू किया, तब तक हिंदी में बहुत अच्छी एक सबसे बड़ी कंपटीशन के तौर पर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी, जो बड़ी अच्छी, उनका भी अच्छा मतलब मूवीज बनती हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन के तौर पे साबित हुआ, और उसके कारण शायद वो परंपरा उतनी सुदृढ़ ना हो पाई। लेकिन 50s 60s 70s में मोहन राकेश और धर्मवीर भारती जैसे शानदार लेखकों ने आकर बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी, आधे अधूरे, अंधा युग इत्यादि। और उसके बाद से फिर थोड़ा सा नाटकों ने हिंदी में जोर पकड़ा है, नाटक लेखन ने पकड़ा है। तो अब जाके ऐसा लग रहा है हम उस स्तर पर धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं दूसरी भाषाओं से। Ashok ji, when we look at theater and there are certain expectations which you may have as a viewer, तो आपके मन में क्या होता है? कौन सा नाटक है, अगर आप उसके कथानक की दृष्टि से देखें, जो आपको अपील करता है? एंड लेट मी कंट्राडिक्ट माई सेल्फ विद योर परमिशन टू से, मेनी टाइम्स it is the structure, the way story unfolds step by step, which keeps you pulled towards it. तो ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? So, in my opinion, when we look at the script, Indian Heritage and Cultural Association, we try to bring the script, which is not just the mere entertainment, but we also wanted some social aspect of it. The name Natya Darpan itself means the mirror to the society through performing arts, like a theater. So we wanted to see a play which has some social impact, some social issues discussed in that particular play. We have been very fortunate to receive this very strong scripts about women empowerment, mental health, um, immigration, human trafficking. We have scripts like LGBTQ. So all these social issues, which are kind of a taboos in our South Asian communities to discuss, we are bringing those on front, and then we are going to discuss with that, because after these type of discussions, we also have a panel discussion after the end of the play, so that will also educate our audience. So I really look forward for those plays which has some social impact. Amir ji, entertainment is sometimes considered the key element. So, in your opinion, message may not keep audience with you, or it doesn't matter? What is your take on the fusion of message and sort of entertainment through theater? I think a very, very nice question, Ashok ji. This is the challenge for any director to strike the right balance between being able to provide a message, yet keeping the entertainment value there, yet not look preachy. When you're giving a direct message, it could sound like as if you're preaching something. So ये बहुत मुख्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है किसी भी निर्देशक की इसको निभाना और इस बैलेंस को प्रॉपरली दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना कि इंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज उन तक पहुंचे और बड़े आसानी से कन्वे हो।
So, based on your experience so far, Ashokji, any play like I saw, and the range of plays which Natya Darpan offers have very different themes, whether it is something to do with youth here, and maybe it is related to the problem of drug addiction, or something to do with corruption, or very very emotional plays, like you had one uh, where you are dealing with the question of life and death, so philosophical questions also. Any particular play, Ashokji, that you found very impressive, which was a part of Natya Darpan? Well, actually, it is very hard for me to pinpoint one or two plays. We have almost 54 plays in last 8 years. So most of the plays, I really like it. One thing I can think about one play which we did it as at Natya Darpan was a Bengali Hindi play called Nirastra, which was a very intense play, and it has a story about Adivasi woman, tribal woman, and the police officers, and of course the Naxalite. So there is a tug of war between the abuse of this tribal woman. So at the end, she is so fearless that she defend herself. So that was a very, very intense play. It was a graphic play, and that was very well done by that particular group. And I was very impressed with the boundaries of community theater they come up across. And I think one of the big compliment was after that play was over. That time it was a chief guest, Dr. Mohan Agashe. So he took a mic and he said, "After this play, we cannot say anything. It was so intense." And that was the compliment, the best compliment he could give for that play. So yeah, there are a lot of plays, but this strike down to my mind. So let's look at this year's Natya Darpan, and the six plays that those who come will get the opportunity of getting to see the same day from 1 p.m. to 6:30 p.m. at Middlesex County College. Uh, you want to say something about the plays that you have chosen, and what are the criteria which gives these plays the opportunity to be there? Well, I can't go into detail of each place, but these six plays are amazing. This is the first year we are giving opportunity to our next generation because we also owe them a platform. So this year, one of the play we have all artists are our young generation. They are teenagers as young as 13. They're talking about the topics which is very close to their general life and unfortunately close to our life as well. So that is in English. We have another philosophical play, Law for the Entitled, which is also amazing play in my mind because it allow us to think about what is entitled and who is going to get what is the right to have that entitlement. There are plays based on our COVID era when everybody was at home and people who try to make uh, the best out of it. There are plays in this one is of course some social cause. Amiya ji's play Nana Hai Bahadur. I would let him talk about it. Another play, Marathi play, is Pratibimba. It is written by a very renowned Marathi writer, Mahesh L. Kunswar. And this is regarding the mind between what we want and what we see in the mirror. Because the very short sentence, the play is about the man who lost his image. So he doesn't see his image in the mirror, and then what happens? But then there are a lot of nuances with that.
And then last play is also a satire, humorous play about the life, about wife, husband, and another girl. So it is a funny last play. So there are different genres, different actors. Two of them, two of the theater groups are coming from California. There are one is coming from Philadelphia, and of course, remaining three are from New Jersey, New York area. So we are really excited, and it is a jam-packed program. I hope our audience will enjoy that. I am sure. Amir, you talk to us about the title of your play is also quite interesting. Na Nahay Bahadur. Why Bahadur is not nine? Nine. बहादुर जो है, मैं बहुत ज्यादा रिवील करके स्पॉइल, इवन मुझे मालूम है आप भी आने वाले के लिए भी नहीं करना चाहूंगा, पर बहुत शॉर्ट में बताना अगर चाहूं तो ये एक सोशल कॉज से ही संबंधित है ये प्ले, जैसे अशोक जी ने बताया। एक व्यक्ति है जो 13 महीनों से जिसने स्नान नहीं किया है, बात नहीं लिया है, तो वो क्यों नहीं लिया है और उसके कारण उसकी पत्नी परेशान हो गई है बदबू से, और कोर्ट केस दायर कर देती है। तो ये उसके आगे की कहानी है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या मैसेज है। तो वो तो बाकी बाद हाँ, दर्शकों को देखने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो बाकी का मैसेज तो पता नहीं, लेकिन ऐसे जल संरक्षण अभियान में वो जुटे हुए होंगे बहादुर बहादुर कि नहाएंगे नहीं तो पानी बचेगा। तो जी। चलते चलते एक और बात जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, जब आजकल स्क्रीन टाइम हमारा बहुत रहता है, जैसे कि हम बात करें डिजिटल ईरा में, तो आपको क्या लग रहा है अशोक जी, डू यू सी द नेक्स्ट जनरेशन टेकिंग enough interest in theater and dances, or many events I see that above 30 40 crowd is more and youngsters are less. What is the situation in your this Natya Darpan generally? You have rightly pointed out that yes, I can see that there is no participation, or there is very little participation from the younger generation, younger below 30, 35. But at the same token, I found out that there are plenty of plays and plenty of dance events are in New Jersey and New York areas organized by young generation. So there is a disconnect between our generation and their generation to get involved. And I think that is because the new generation or the young generation is more into how I should say, not just they are very smart and they are very tech savvy, and we as our generation are still in an era from where we came from, India, right? 30, 40 years back. And the new generations, their concept, their choreographies, their plays, the topics of their plays are slightly different than what we are doing it here. So slowly in of course, this is a topic of Natya Darpan, but in Nritya Darpan, we are bringing those young artists and we are bringing the hip hop dance. It is not just the classical Indian dance, but we are bringing to have not is a fusion, but we will let them do what they wanted to show rather than we force them to show certain things. So that is where we are going forward. We have to get, integrated into each other's culture. तो एक तो मैं समझता हूँ भारत के स्वाधीनता दिवस के ठीक बाद में जो ये एक तरह से भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाने जैसा कार्यक्रम नाट्य दर्पण हो रहा है 20 अगस्त को न्यू जर्सी में। पर वही सवाल बहुत संक्षेप में अमीया जी आपसे, जब आप कोई प्ले होता है और आपको क्या है नए सिरे से कलाकार ढूंढने पड़ते हैं कई बार डिमांड के अनुसार स्क्रिप्ट की, और इस प्ले में भी महिला पात्र अधिक हैं, आप पहले बता रहे थे। पर जब युवा और बच्चों की आवश्यकता पड़ती है तो आपके लिए ईज़ी होता है कलाकार ढूँढ लेना? हाँ, थोड़ा अब आसान हो गया है। शुरू में ज़रूर मुश्किल होता था। मैं कुछ अच्छी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ, जो समय-समय पर मुझे कभी निर्णायक के तौर पर या किसी तौर पर बच्चों की कुछ प्रतियोगिता है, नाटकों की, कविता की, उसमें बुलाते हैं, और मैं काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चों को देखता हूँ इन सब में, तो और फिर वहाँ पर कई बार अनाउंस भी करता हूँ कि हम लोग नाट्यकर्म कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो जुड़ें। तो इस तरीके से एक थोड़ा यहाँ पर माहौल नर्चर हो गया है न्यू जर्सी, सेंट्रल न्यू जर्सी में, जिससे मुझे अब थोड़ी आसानी हो गई है कलाकार
स्पेशली बाल कलाकार वगैरह या टीनेज आर्टिस्ट ढूंढने में। या तो चलते चलते अंतिम जो प्रश्न है वो अशोक जी से, कितना संतोष आपको है अब तक की सफलता से, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड अबाउट दिस वंडरफुल नाट्य दर्पण, अशोक जी? First of all, I would like to thank you for inviting us in your studio and discussing about Natya Darpan. That is wonderful. Um, we also found that this is our 8th year, and we are getting tremendous response from the New Jersey artist or audience, because I really thank them. The reason behind it is they have a lot of opportunities outside. They have Broadway shows, they have shows coming from India, musical shows, anything. But they come every year in a large number and support this local US based talent. So I really thank them, first of all. I'm hoping that they would enjoy and they are open minded in our so called plays, because these are experimental plays. They We do not have any censorship to the director. Whatever director's vision and experience is, we would let him or her perform. So these are kind of experimental theater, and I hope my audience will enjoy the efforts of the directors and actors. Absolutely. So So again, the place is Middlesex County College, and that is 2600 Woodbridge Avenue, Edison. And I thank Ashok Chaudhary ji, founder president of IHCA New Jersey, and founder director of Prayog Theatre, Ameeya Mehta ji. And I also thank all of you for being a part of this conversation with lots of good wishes. Namaste. thank you. Take care.